أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए लंदन रवाना। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सजा सुनाने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जुडिशियल ट्रेनिंग की शिरकत के लिए लंदन रवाना हो गए, जहां वो 5 से 13 अगस्त तक ट्रेनिंग में शामिल होंगे।
महकमा दाखिला पंजाब ने इमरान खान को जेल में बी क्लास देने की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में बी क्लास देने की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता रोज एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के सरबराह जहांगीर तरीन और अलीम खान का कहना है कि जब तक बुजदार और फरागोगी नहीं पकड़े जाते तब तक करप्शन का सिरा नहीं मिलेगा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए अलीम खान ने कहा कि इन्होंने PTI में रहकर जो देखा वो पूरी दुनिया को बता दिया। जिस इंसान को तकब्बर की लानत पड़ जाए इसका वही अंजाम होता है जो चेयरमैन PTI का हुआ। कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की कई बोगियां नवाब शाह के करीब पटड़ी से उतर गईं, जिसके नतीजे में 30 अफराद जाँ बहक 80 से जायद जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से हजारा जाने वाली एक्सप्रेस सरहाई रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में हजारा एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रैक से उतर गईं। MQM ने कराची वालों की पीठ में छुरा घोंपा, मर्दमशुमारी के नतायज के खिलाफ अदालत जाएंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने हाल ही में होने वाली डिजिटल मर्दमशुमारी के नतायज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा है कि इलेक्शन में ताखीर विफाक के लिए खतरनाक साबित होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात के बाद कोई बात कह रहा है कि इलेक्शन 6 माह मुअख्खर होंगे और कोई ये बात कह रहा है कि इलेक्शन 7 माह मुअख्खर होंगे। रावलपिंडी में कुएं की खुदाई के दौरान जहरीली गैस से 4 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी के इलाके मसा कसवाल में कुएं की खुदाई के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक चारों अफराद कुएं में मौजूद जहरीली गैस से जाँ बहक हुए। मय्यतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने कहा है कि तोशाखाना केस सुनाने वाले जज को पहले ही लिखा हुआ फैसला दिया गया, क्योंकि चेयरमैन PTI को नाअहल करना और जेल में डालना ही PDM का प्लान था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को 45 लाख माहाना तनख्वाह की पेशकश को कम करार दे दिया। अपने एक बयान में साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने खिलाड़ियों के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 45 लाख माहाना की तनख्वाह बहुत कम है। और पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया। कहा कि धमकी अमेज लहजे में लिखा कि सुनने वाले सुन लें, अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो अपने फोन में मौजूद तमाम तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं तुम न्यूज और मैं हूं कायम एहतेशाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए तुम न्यूज। जैज़ प्रेजेंट्स, खेल दिल में है।
Viewers, you are watching Guest of the Day, and today my guest is Maggie Wong. She is Managing Director Wuxi Unitex Company. This company providing professional supply machinery and equipments for textile industry. Welcome to the show. Hello, this is Maggie Wong from China, and it's very nice to be here in Pakistan. How your visit of Pakistan, and what is your plan to visit this country, and what is your mission? My mission here is mainly for promoting my products here because Pakistan has a very nice market for the textiles and also for textile machinery. And also I have very loving friends here. They give me they invited me many times for being here and have a look at this country. So that's why I come. Okay, viewers, as you know, Pakistan and China are very beautiful and close friends to each other, and there is a history of this beautiful relationship which celebrate every year by the both countries. So how you experienced when you come airport here at Pakistan? So how was your feelings? My feelings is actually before my leaving, my friend said, "Oh, you're coming to Pakistan, dear brother country." They call it brother country, and they said you will get very well protected there. So, Okay. and when I get to the airport, there is someone come to me just in Chinese and ask whether I need some help, and I just got surprised by that. It's really they cares about me, and I think they cares about each Chinese citizen. Maggie, what you listened about Pakistan before come? How was the picture in your mind about Pakistan? My mind is about the Islam country, and the people are very conservative. Maybe they have cold faces, serious faces like this. Oh, this is so sad. Viewers, this is so important. Pakistan is a beautiful country on the earth. Not only beautiful, but it's a very beautiful and peaceful place. And this perception that Maggie has, it changed when she come here and she watched and she meet with the different persons. It's absolutely changed. So, Maggie, how you would introduce your business, your company, and what is the target of your organization? Yeah, actually, after I've been here, everywhere I get is warmly just the people they treat me very nice. And previously I saw that maybe here people will have little discrimination about women, but actually no, they're very professional owners, they are very professional managers. So I've been very well treated here. What is the textile opportunities and machinery and supplying here at Pakistan? So how would you see this market? The market is quite large. We know that nowadays a lot of textile companies just move to South Asian countries. So Pakistan has a very professional team about taking the textile market. So more and more textile companies move to move to Pakistan. And there is a lot of market asking for the machinery. That's why I come here. And I heard that Lahore is going to have very professional exhibition about the textile. So I would like to have a look.
what are how you can explain your company, what type of machinery and accessories your company provide to the industry, textile industry? Yes, it's my machines is mainly about the dyeing process, dyeing and finishing. Like the clothes you're wearing is black, Okay. and Luckily we both have black. oh, this is like a dark Yeah. blue. It's Yeah. like how we make the colors to be these. So it is our machines. Okay. So from the textile, the fabrics, the yarns, Hmm. even the fibers, we dye them Okay. and then make it to textiles to be the clothes, the garment you are wearing. So that's about our daily life. It's very important industry here. Maggie, when you come Pakistan, so what is the target of your target to capture the market, and how much you expecting the business from Pakistan? Oh, this time I have done business with Pakistan for more than 10 years, but I never been here. So I would like to visit my customers to see the people who I'm cooperate with, and see whether there's more opportunity we can dig in our business here. And then when I come here, talk with the people here, I know that they have a lot of needs about Chinese products, about Chinese machinery, and maybe right now it's not easy for them to come to China to have a visit. So I come here and to meet them. I hope that we can find more opportunity for our cooperation. Have you fixed any figure you would raise the volume of your business with the help of Pakistani market? How much you expecting business? Oh, um, I think should be a large volume for my products. But I have to develop my market here very well, to set up the relationships with local markets. So volume should be increased year by year. Should be a lot. I have no exact numbers for you, Okay. but I have very good expectations for that. Maggie, what do you say relationship China and Pakistan? They are very close friends in this region, in the Asia. So what do you say about this friendship of both countries? We've been support each other for our the hard years. So with kind of bond, we are not easily just I don't know how to say that word. It's just how to say that? Oh, we are not easy to break each other for this. So, and these years for political parts and also economic parts, we have a lot of works together. So I think the bond going to be deeper and deeper. And then, like each Chinese knows that Pakistan is a country we can count on when we have the hardship. So I think that's it. Maggie, I would like to ask, what is the scope of textile industry in China, even in Pakistan, The scope. of textile industry? Textile industry.
It's both very important for Pakistan and for China. China is developed from textile industry, and I didn't do the research, but textile should also be a very important part for Pakistan. You're the main country supplying the cottons, and there's a lot of markets that count on the textile from Pakistan. So both of the countries should be depends on textiles a lot. Maggie, you meet with the Pakistani people here in Lahore when you came. So, how is your experience to meet the Pakistani people? The Pakistan people, I think they're very warm, they're warm-hearted. You can be friends with them easily, and they have an open heart. They're very hospitable. So I really think that we should come here to know each other more, and I hope that And we are, both countries are friends in a true meanings. yes. Yeah. Viewers, as Maggie, she is telling us her perception when she was at China. She was listened about the Pakistan. There's somehow conservative society, but her perception when she came this country absolutely changed when she seen our girls are going to the school, colleges, universities, and the most important thing, our religion is the most peaceful and the which gives harmony with all the even religions, with the people. So she came here, Lahore, and Lahore is a very richest city culture-wise. This is the city of the garden. Hopefully, Maggie would enjoy this city. She would enjoy the foods of this city and the places, historical places, museums, and even she would meet the university students and interact them. Maggie, it's a time when you can move here in the different cities, in the different places, Lord. So, have you marked some places where you would move during this trip? I would like to see the mosques. Yeah, and I just heard from a friend that the Lahore Museum is a very nice place to visit. Okay. Yeah, I can go there and see the history of the Pakistan. Okay. Maggie, if someone want to go China, and what are the attraction of China for Pakistani people? What they can enjoy at China? China is like an exotic country also to Pakistan, and you can see the Chinese people also very warm. They are very nice to foreigners, and from the food, we have a lot of choices, more than Muslim food. Okay. The culture is like we have 5,000 years of history, and they will find a lot of they can visit different mountains, different nature sceneries, and it will be. If you've never been to China, it's really worth your trip. What is the educational opportunities at China if Pakistani students move for China? So what is the opportunities for them? I know some Pakistan friends who study in China,
learning about the pharmacy, um, because there is more trade between China and Pakistan, and you can come there to learn about the language. What is the educational level of China if you compare it in the international level? It's very close nowadays because Chinese has an open mind. They can absorb all the most advanced technology from all of the world. So you can study international level of education from China. Okay, viewers, you are watching Guest of the Day, and today our guest is very beautiful Maggie Wang. She is Thank our you. guest, and she is managing director Wuxi Unitex company, which deals supplying of machinery and accessories to the textile industry. And she came Pakistan to capture the market here for textile industry, to create business for her company. So that's why she came here. But when she came Pakistan, so she is enjoying her visit, and she is so happy to meet the Pakistani people and enjoying delicious foods of the Pakistan. Even she is portraying the picture of the China. China has too much opportunities in the different capacities, especially the technology is very advanced at the China, and this has been supplying to all over the Europe and all over the world, and China has captured the market of the whole world in the technology. And she came here. Maggie, just tell, when any tourist come at China from Pakistan and all over the globe, so what is the tourist attraction for him, for her at China? You mean if you are as What is tourist attraction? tourist attraction. China is a very large country from north to south, and from the east to west. They have very different sceneries. You can experience the change of the 4 seasons in one day, and also the food is different, the culture is different. Actually, we also in China we also have Muslims. In the western part of China, we have the Muslim culture, Muslim food, and in the north part of China, we have that Korean styles. And the southern part is more close to, like, maybe you can feel something in Malaysia, Indonesia, like this. So this is about nature, and also about the history, about the culture. You can feel total differently culture from all of the world. And China is a country which absorb every tourist in all over the world. Yes, I think so. And the Chinese can be found in all over the globe, in every country. Chinese are moving there, and they are doing the business there. Yeah. And so, Maggie, I would like to ask you, what about your education and your childhood, your family? What would you say about it? In China, we cares about education a lot. You see, after the Chairman Mao generation, then our country tried to catch up with the world. From a very poor country, we realized that the education is very important. So how education gives the advance of the technology of all the other parts of life. So we focus on the education a lot. And right now, even if my kid, he has a lot of actually he has a lot of homework. He has to study a lot.
For this part, I think China, we are very focused on education, and even the ancient celebrity is like Confucius. He told us to learn all of our life, and so that's why Chinese go to other countries to learn from them, to bring back the different thing. How Chinese girls participating in the different fields after getting education or completing education. So what is the contribution of the girls, Chinese girls in the industry? Oh, actually, we say that in China we say that women is half of the sky. The whole sky, Yeah. the half belongs to Chinese women. So in the Chirmenmo dynasty, we say that the women also the women's role is important as the men. So he encouraged the women join the work, all kinds of work. He said that women can do the same thing as men. So that's why in all the industry, not just the office, even in the workshop, you can see women works as men. And for the intelligence part, the women also they don't lose to a guy. And our society just admits the importance of women for the work from the work part. So yes. And viewers, this is so important. The Chinese girls participating equally in their industry, and they are participating all the domains of their life, their industry, and that's a major reason development of China. China is very advanced in the technology and moving for development, and even symbolic for all over the world. Yeah. Every country has been surprised how rapidly China economy has been moving up and capturing all the market of the even Europe and Western countries, even Asia. So how you see in a very short time, 60, 70 years, this is a big achievement of China. What you would say? I have to say the Chinese nation is quite diligent nation. People are working hard. We focus on work a lot. And also our part our party had made right decision. They guide us, they guide the people move forward in the right way. So that's why we develop so fast. When the whole nation they can work as a unit, then you can go forward very fast. So when you spare your time, whenever you spare your time, so how you would spend it? Enjoy the music, movie, or with the family. So how you spend that time? My spare time, I like sports, and I joined a lot of races. I tried different things like dancing, hiking, saxophone. Do you dance? uh, Do you dance? yeah, I learned dance and pole dancing. Okay, that's great. I tried to experience You are something. very artistic. Yes, How sweet. yes. It's just like there is so much new in our life. We should not bound in just one short time. We should explore more, experience more. Then that can enrich our life. Which type of music you enjoy and you dance with that music?
I learned Spanish a little bit, so I can dance a little bit salsa. Okay. I think Latino music is quite passionate. The people in my country actually is not so. It's not so passionate. We don't express ourselves too much. So when I first knew about the salsa, I think it's very nice dance to know. And what is your Maggie? What is your favorite food? What you like to eat normally? I don't have my favorite food, but I like the food from each nation. Even right now in Pakistan, I like the local food so much. It's so delicious for me. Okay, our viewers, as Maggie, she is telling about the Pakistani foods, and she love to take Pakistani foods, and she would enjoy the local foods, which are very delicious, very tasty, and very diverse. Hopefully, she would enjoy all those Yeah. delicious foods. Um, What is the favorite foods? China, even the market of the foods also captured here at Pakistan by Chinese foods. Oh, you mean the culture about the food in China? Yeah. Then I can talk so long. So we have 8 cuisines actually in China. We call the different styles. We have 8 different styles. We have spicy food, sweet food in Shanghai. Normally they bring for sweet food, but in northern part of China, in southern part of China, they bring for spicy food. We have totally 8 different food, and you can try. But our nation we like pork a lot, so don't try that. Maggie, do you like traveling? And how many countries you have visited? Even tell about the China. Which places you like? I like China western part. It's Okay. so large and not much population. You can totally enjoy the nature. It's like there's mountains, there's snow mountains, and there are desert, and there are different sceneries you can see, and you can feel you are so small as a human in front of nature, and you can also be astonished by the beauty of the nature. So if you get a chance, I just recommend you to visit Western China, but also Okay. in other parts of Would China. you invite me there? Yeah, why That's not? great. Okay, we would explore that place together. Okay. How many countries you have visited? Most of my trips are for business actually, and my business are mostly in Southern Asian countries like Indonesia, Malaysia, like Sri Lanka, Bangladesh, and also been to Egypt, Uzbekistan, and Korean, Japan, like these countries. But and Pakistan is my target place for a long time. I have no chance to come, and this time my friend. But you availed a chance to come. Yeah, this time I just my friend invite me. Okay. I find no excuse not coming. And we are sure it would be a very beautiful trip, and you would enjoy all the days, all the activities. Even you would capture easily the Pakistani market and promote your business and industry. Even it would be the very good relation among the China and Pakistan, and it would develop opportunities for both countries in the textile industry. Yeah. Not just that. Actually, my European friends just admire you so much. They think that wow, you are coming to Pakistan is like a mysterious country for them.
So Okay. they really wanted to come have a look, but for some of them, they have visa issues. Okay. So they also want to come. What is the beautiful things about China? I think the beautiful part is that I have a lot of foreign friends. They're just surprised by Chinese security and safety. Okay. It's like our government protect the people very carefully, and so in our country you can go out, even you're a girl on your own. You can go out in the night, go on the street and go back home. That's totally okay, and no one feel insecure. So this is this is a nice part of China. And nowadays there is no safes. We just keep our bags. Sometimes we just don't zip it, and we feel no insecurity about that. So the whole society is kind of a harmonious society right now. And what about family system at China? How families live together and spend their day-to-day working, and how is the relationship of that? Maybe our last generation Yeah. is more like Pakistan right now. The whole family is together. Then they have very deep bond between each other. But right now, since our society, that developed fast, the industry, people has to go to work. Even women has to be part of the work. So we don't have much time to take care of each other. And then the families, and because of their own the one child policy, so the family is getting smaller and smaller. The young people, they just live separately from parents. Not like here in Pakistan. I just got surprised by your big family. You have so many siblings. We don't have so many sisters, brothers. Some people, they just one on their own. It's nice to have sisters and brothers, someone to talk to. Okay, that's great. And normally people spend mostly of that time in the industry and in the technology and making and all these things. So how much they are romantic in their life, Chinese people? I have to say not so much right Yeah. now, but these years people are more caring about the spiritual things. They're more care about after I earn money, what I should care for. So romance is something coming. But yeah, this we call it in China. We have different saying. We say that the love is between the normal life. So I say the water should flow slowly, and then the life will be peacefully and harmony. Okay, and love, peace, harmony, these are the beauty of the life. Yeah, in every country. Every country, everywhere, Yeah. and it should be enjoyed. Love should be enjoyed. Yeah. Yes. So, how was your educational experience? Where you studied? I study in China. All of my studies finished in China. I studied in college for 4 years for Okay. international trading. Then it's very lucky that I just been to the international trading till now. So I've been work in something I love. Maggie, I would like to rewind you. How was your childhood at China? How you spent? Have you memorized, recall? How was your school days at China? And that time was how much sweet for you?
My school days. Um, Actually, before university years, Yeah. um, our life is about the study. Okay. Most of the time is about study. We have very heavy study work to do, and the kids they're not allowed. Even the young people they are not Yeah. allowed to think about other things. Other things. Even the youngest love beating each other not allowed. So the main thing we have to do is focus on study. And after university years, our life is becoming colorful. Okay. How sweet. Yeah, we have a lot of choices in university. You can decide how to spend your spare life. Okay, that's great. Maggie, I would like to ask you, which is your favorite movie? Oh, I like the movies that reveal the society for us, Okay. to know about other people's lives, to know about the other class lives, about the maybe review the systems. If there anything we can make our society a better world, so people can focus on that. I really like that kind of movie. Okay, Maggie, I would like to ask, here at Pakistan, people are very closely connected to the social media and connected with the Twitter, Facebook, and the YouTube and all these things. So, how much time given by the Chinese people to these mediums and spend their time to this technology? That's terrible lot. This funny thing is, once I was in the having lunch with Italian friend, he Okay. said that look around you. Then I look around me, like each people, they're waiting for food. Then they just playing them on mobile phones. Even the lovers, they don't talk to each other. They're playing their mobile phones. Okay. So I think that China has been very addiction to networks, I think. Okay. And at right now in China, they are using all these technology and mediums, which are conversation for social media and digital media and all these things are using by the people. Okay. Yeah. Okay. Maggie, I would like to ask you, what have you explored on the internet about the Pakistan? Which would be the favorite place for you to visit during this business trip? You mean my favorite place? Where would you like to go here at Pakistan? Have you decided some place where you would move? I really want to visit the Kashmir area, but I'm not sure whether I'm allowed. Maybe I'm not allowed to go visit, but I heard it's a quite pretty mountain area. Okay. Yeah, it's like I really And want. that's a very natural place. There are rivers and yeah. mountains, Yeah, greenery, rivers, and peace, Yeah. and very silent places. It's Yes. amazing. Yeah. And I would recommend you, if you have to see the Pakistan, so visit the northern areas and visit all these places. That's a paradise on the earth. Yeah, maybe you can recommend me some places and Yeah, I nice, would like to go with you. Yeah, nice mountain areas. Yeah. Yes. That's good. So when you would be back from Pakistan after completing your business trip, so how would you portray the Pakistan picture to the other world? Why not? I really want to share with my friends my experience here and want them know more about Pakistan, about the houses here, Yeah. the food here, and also meet Lovely the nice people here. Yeah, and lovely people here. I hope they can see from my media about this. That's great. Okay. Best wishes, Maggie, for your this Yes. business trip. Hopefully,
you would be gain a lot of your business and promote your company, your industry, and it you. would be your visit would be very fruitful for textile industry. Thank you. Thank you so much. And viewers, as we will discuss the different aspects of the Pakistan and China, and especially the opportunities of business here at the textile industry, and she came to capture the market of textile industry and provide the machinery and accessories to this industry and promote her company and business, and our well wishes for her. Today at Guest of the Day, our guest was the Maggie Wong. She is a beautiful lady and a business entrepreneur, and she is very confident, answered all the questions, and the chemistry of the questions and answers was developed very beautifully, and all the answers were very great. And so we would meet you again in the next program, Guest of the Day, with the other guests. Goodbye. सच के अलम बरदार बेखौफ खतर की सहार तुम सच के अलम बरदार बेखौफ खतर की सहार तुमसे तफरीह मिले तुमसे खबर मिलती है दिल के बागीचे में क्या क्या नकली खिलती है तुम जो रोशन हो तो रोशन है हर एक दरियाए जान तुम सहर दोगे तो फिर शाम कहाँ ढलती है बसारत तुम समात तुम हिफाजत तुम हिमायत तुम नयाबत तुम क़यादत तुम हिदायत तुम वज़ाहत तुम तनन 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 We are PIA, Pakistan International Airlines, the national flag carrier and the most prominent Pakistani entity in the international skies. With our head offices in Karachi, we operate from two major hubs, Karachi in the south and Islamabad in the north. Flying passengers across the globe is our fleet of 32 state-of-the-art aircraft, with the Boeing 777 family serving as our workhorse, supported by A320s and ATRs. We are the first non-communist airline to fly into China, opening it to the world, creating truly global east-to-west connectivity since 1960s. First to connect Asia to Europe and Moscow. Upholding a tradition of introducing successful aircraft to the world, our 777 holds a world record of the longest non-stop flight. We are an expanding network of 27 international and 21 domestic routes, and the only airline to operate to the most beautiful northern areas of Pakistan. We are a synonym of Pakistani hospitality, known for our most delicious meals, prepared in our own kitchens, exhibiting high levels of professionalism. Our highly trained pilots and crew are recognized the world over. Those smooth landings don't come just from instincts. We have one of the most competent and professional engineers who service not only PIA, but all major airlines. The Isfahani hangar, when first constructed, was among the largest in the world and serves as home for all PIA fleet for maintenance.
PIA is Pakistan's most iconic brand. The nation's love and emotional attachment for PIA is unprecedented. PIA's journey to success continues with ever-improving customer care. Increasing global spread, providing connectivity from all parts of Pakistan to the world, reducing distances, spreading love, celebrating the seasons and colors of Pakistan. We are Pakistan International Airlines. We are great people to fly with. जल्दी हाथ चलाओ, ये फूलों की टोकरी और मंगवाइए। तो फाइनली तुम ये कमरा खाली कर दोगी? कितनी दफा बताओगी? और ये घर भी खाली कर जाओगी? कहीं तुमने जो दिल की बात, क्या बात है ये जो तूने दी मुझे सौगात, क्या बात है, क्या बात है। ताजा मछली, ये मिर्च मसाला। अरे गिल्लू, मिर्चों से मसूड़ों में जलन की है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। कोलगेट हर्बल, लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीना वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। मसूड़ों में जलन अब नहीं। कोलगेट हर्बल अपनाओ, जो चाहो वो खाओ। मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। जैज़ प्रेजेंट्स खेल दिल में है। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल झड़ी है। हमसे आके तो खेल मुकाबले की घड़ी है, आ देख आके तो देख, आगे तेरे कामयाबी खड़ी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है। खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है। घर मैदान मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। दिल से खेल खेल दिल में है, दिल से खेल खेल दिल में है।
इरादे तू ठान ले, जब तक है हिम्मत तू ये मान ले, अपने जुनू की तुझे कसम, तू है खिलाड़ी तू ये जान ले। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल जड़ी है। खेल ही जिंदगी जिंदगी, खेल ही जिस्मानी शायरी, खेल ही दोस्ती दोस्ती और हम भी मैदान के खिलाड़ी, खेल ही यकजहती है, खेल पे यकजहती की जिम्मेदारी, खेल ही आजादी और आजाद उड़ान ही तो है सब पे भारी। बारी बारी वार फिर अगले को खार, कोई लुत्फानंदोज कहीं औजार में भी हिस्सेदार, मेरे जैसे हजार यहाँ जज्बा है लाया कुदरती फनकार। दिल की आवाज में रामे दिल से निकले शोर, दिल की आवाज फिजा में हवा का रुख मोड़, हम भी कम नहीं किसी से, हाँ दम है कदम में, हार जीत भी सरहदों को दे यहाँ जुड़। खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है, खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है, खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है, दिल में काम मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही जिंदगी जिंदगी जिंदगी, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही दोस्ती दोस्ती दोस्ती, दिल से खेल खेल दिल में है। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट मदहोश। आज करेंगे बातें आराम से। ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡਿੰਗਲਿੰਗ 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 ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡਿੰਗਲਿੰਗ ਡਿੰਗਲਿੰਗ। उम्मे नुसरत फाउंडेशन थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का निगहबान, जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई। उम्मे नुसरत फाउंडेशन जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान नियाजी की सरपरस्ती और मायरा खान की सदारत इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल है। आए हमारे कदम से कदम मिलाएं और इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ दें। आपकी ज़कात व अतियात मासूम बच्चों के लिए नेमत हयात, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के लिए जदीद लेबोरेटरी, खून टेस्ट करने के लिए मुकम्मल लैब, खुश अखलाक अमला, हम वक्त खिदमत के लिए कोशां। आइए इन मासूम बच्चों को जिंदगी की नई उम्मीद देने में हमारा साथ दें। मिन जानिब उमैर खालिद, डायरेक्टर ताल्लुकात आमा, उम्मे नुसरत फाउंडेशन, सदर दफ्तर 27 कॉलेज ब्लॉक, नज़द यासिर रोस्ट, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर। मोबाइल नंबर्स 0333 0481 648, 0332 490 5336, 0323 4462 482। रोटी को ढूंढता हुआ कूड़े के ढेर पर, रोटी को ढूंढता हुआ कूड़े के ढेर पर, देखा है मैंने चांद का टुकड़ा, देखा है मैंने चांद का टुकड़ा, अभी अभी रोटी को ढूंढता हुआ
है। गली के सारे दरीचों से खौफ झलकता है। एक माँ के दिल पे क्या गुजरी जब देखा अपने दिल का टुकड़ा भी अभी रोटी को ढूंढता हुआ कूड़े के ढेर पर, रोटी को ढूंढता हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुमसे मेरी पहचान पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ शाहिदा नवी। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं आज गंगाराम हॉस्पिटल में और यहाँ पे हम मुलाकात करेंगे थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर से और यहाँ के पेशेंट से मुलाकात करेंगे और देखेंगे यहाँ पे किस तरह की वर्किंग हो रही है। ये सोसाइटी डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर जवेरिया मन्नान ने आज से 27 ईयर्स बिफोर इसका स्टार्ट लिया उन्होंने, और यहाँ पे पेशेंट्स को हर तरह की एकोमोडेशन प्रोवाइड की है। आज हम विज़िट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है और पेशेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है आपके लिए। जब मुझे पता चला कि हम गंगाराम जा रहे हैं तो आपको एक ये भी बता दूं कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे HOD हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। मेरे साथ रहिए, आइए हम विज़िट करते हैं। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त अब्दुल मुनीम खान साहब जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के। इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे इनको कितना अरसा हो गया इस सोसाइटी को बनाए हुए और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन हमें हमारे व्यूअर्स को देंगे। आपकी सोसाइटी कब से आपने इसको डेवलप किया और क्या क्या आपकी जो है वर्किंग है? जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने इतने हसास मौजू को जो है वो एड्रेस किया है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और लोगों के अवेयरनेस के लिए यूज़ करें। बेसिकली इस वक्त हम थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के डे केयर सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 3000 थैलेसीमिक बच्चे ज़ेर इलाज हैं जो पूरे पंजाब से और इवन के पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे अपने इलाज की खातिर आते हैं। थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो 1994 के अंदर जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद और प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मन्नान ने रखी थी। तो कुछ अर्सा पहले तक प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी जनरल सेक्रेटरी थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ वजूहात की बिना पर मसरूफियात की वजह से रिज़ाइन किया, और प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मन्नान जो है वो हमारी प्रेसिडेंट है। तो ये एक पायनियर सोसाइटी है जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने थैलेसीमिया के काम की बुनियाद रखी। एक दौर ऐसा भी था कि जब टोटल MBBS के कोर्स के अंदर सिर्फ 5-6 लाइनें थैलेसीमिया के हवाले से होती थी, और इवन के डॉक्टर्स को भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी। सिर्फ यही पढ़ाया जाता था कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके अलावा जब थैलेसीमिया के बच्चों के साथ एनकाउंटर होता था डॉक्टर्स का, तो वो भी मजबूर अपने आप को महसूस करते थे कि उस बीमारी के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती। तो प्रोफेसर यास्मीन राशिद और डॉक्टर जवेरिया मन्नान ने इस काम का बीड़ा उठाया, और चूँकि वो दोनों गंगाराम हॉस्पिटल में रह के जा चुकी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मन्नान रिटायर हुई हैं एज ए HOD पीड्स डिपार्टमेंट गंगाराम, और FJ की प्रोफेसर थी। इसी तरह प्रोफेसर यास्मीन राशिद गायनी के शुबे में यहाँ पे काम करती रही। जी, उनकी उस हवाले से यकीनन हम सबको उनका इंतहाई मशकूर होना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ को उन्होंने उसकी बुनियाद रखी कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह के इतने वसी लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी के बुनियादी मकासद में एक तो ये था कि
इस मर्ज़ के हवाले से आगाही लोगों को प्रोवाइड की जाए, अवेयरनेस दी जाए। फिर जो थैलेसीमिक बच्चे पैदा हो गए हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और तीसरा उस हवाले से प्रिवेंशन के कामों के लिए कुछ चीज़ों की बुनियाद रखी जाए ताकि इसको हम प्रिवेंट कर सकें, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को इस बीमारी से बचाया जा सके। तो मैं आपके नाजरीन के लिए थोड़ा सा थैलेसीमिया का बता दूं कि थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों के अंदर आती है और एक बच्चा इस बीमारी को लेकर पैदा होता है। और इसका बुनियादी वजह जो है ये कज़न मैरिजेज़ है हमारे यहाँ, कि हम कहते हैं कि एक कैरियर है। तो कैरियर का मतलब ये होता है कि उस औरत या उस मर्द के अंदर एक ऐसा जीन है जो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो बाज़ाहिर बिल्कुल एक नॉर्मल मर्द या औरत होती है। लेकिन जब एक कैरियर दूसरे कैरियर से शादी कर लेता है तो उसमें 25% आर चांसेस देयर कि उनके यहाँ पैदा होने वाली औलाद थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकती है। अच्छा, वो चाहे वो माइनर की हो चाहे मेजर की हो, फिर भी वो चांस होता है? जी, दोनों अगर माइनर होंगे जी, अच्छा। उसमें ये 25% चांसेस होते हैं कि वो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा। वो उसमें वो कैरियर भी हो सकता है बच्चा, लेकिन 25% चांसेस एक काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। तो जब हम कहते हैं कि थैलेसीमिया मेजर, तो थैलेसीमिया मेजर से मुराद ये है कि एक ऐसा बच्चा कि जो अपनी पैदाइश के तीसरे महीने से ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होगा, उसको ब्लड की कमी का शिकार होगा, उसको मुसलसल ब्लड लगना है, क्योंकि उसकी अपना जिस्म जो है उसका रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाता। तो इसकी वजह से उसको दूसरे किसी सेहतमंद आदमी के सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको करनी पड़ती है, किसी और सेहतमंद आदमी का ब्लड उसको लगाना पड़ता है। ऑन एवरेज एक थैलेसीमिया बच्चे को हर 15 दिन के बाद एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो ये तो उसका एक बुनियादी ट्रीटमेंट है। उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाले इलाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसका जिक्र मैं आगे जाके आपसे करूँगा। तो एक तो हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हम उन बच्चों को जो बच्चे पैदा हो गए उनका ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा, उसकी प्रिवेंशन कैसे हो, कि ये तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं है और कज़न मैरिजेस हो रही हैं और उसमें ये बच्चे की तादाद इस तरह बढ़ती रहेगी। तो हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा हेल्थ सेक्टर पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। अभी तक हम पोलियो से लड़ रहे हैं, हम चेचक से लड़ रहे हैं। अभी तक चेचक आप गुलाब देवी हॉस्पिटल टीबी जो है गुलाब देवी हॉस्पिटल जाना पड़े तो ऐसा ही लगता है कि शायद हर बंदे को अभी टीबी है। तो इस तरह के मुल्क के अंदर सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन यही था कि हम उसको प्रिवेंट करें, कि हम ऐसे बच्चों के पैदा होने ही ना दें। उसका क्या हो सकता था, तो उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जब रिसर्च की तो पता लगा कि CVS एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक विला सैम्पलिंग, के तशखीस कबल अज़ पैदाइश। तो वो बाहर जाके उन्होंने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली और फिर वो पाकिस्तान के अंदर आके पहला CVS टेस्ट उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया। और मेरा ख्याल है ये सिर्फ आपके पास ही हो रहा है CVS जी का। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि शी इज़ द फर्स्ट वन कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो पहला CVS टेस्ट किया, फिर उसको यहाँ पे ख़त्म नहीं किया। उन्होंने इस CVS टेस्ट की ट्रेनिंग तमाम डॉक्टर्स को दी, इवन के मुल्क से बाहर भी कई ममालिक में जाके उन्होंने इस चीज़ की ट्रेनिंग दी, ताकि हर डॉक्टर को जो इसमें इंटरेस्टेड है, उस पर काम करना चाहता है, वो ये टेस्ट परफॉर्म कर सके। उसमें ये होता है कि जब आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आने वाला बच्चा या बच्ची वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार है या नहीं। तो जब ये पता लग जाता है कि वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार है, तो हमारा एक काउंसलिंग सेल है जो वालिदैन को बुलाता है और उनकी भरपूर तरीके से काउंसलिंग करता है, उनके सवालात के जवाब देता है कि अगर आप ये बच्चा इस तरह का पैदा होगा तो उसको अपनी आने वाली ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे और एक महंगा ट्रीटमेंट है, और ये सारी चीज़ें में समझाई जाती हैं। ये अवेयरनेस आप पहले देते हैं या बाद में देते हैं? ये पहले हम देते हैं। अच्छा। पहले तो हम अवेयरनेस में ये कहते हैं कि आप कज़न मैरिजेस से पहले एक टेस्ट करवा लें। वो एक बड़ा नॉमिनल सा टेस्ट होता है और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि जो यंग जनरेशन हमारी शादी करने जा रही है तो वो दोनों मियाँ बीवी अपना होने वाले मियाँ बीवी जो है अपना टेस्ट करवा लें। अगर उसमें दोनों में से कोई एक कैरियर आ जाता है, एक नहीं आता है, तो वो सेफ है। अगर दोनों कैरियर आ जाते हैं तो ये ऑप्शन है कि आप ना करें शादी, तो ये बेहतर है। और अगर आप फिर भी शादी करना चाहते हैं, समटाइम फैमिली सर्टन प्रेशर्स होते हैं, आप शादी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन आप फिर जब आप औलाद लेना चाहें तो उसमें आप जब
12वें हफ्ते में पहुंचेगी प्रेगनेंसी, तो उसमें आप ये टेस्ट परफॉर्म कर लें। वो टेस्ट भी डॉक्टर यास्मीन राशिद फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी। वो उस वक्त एक महंगा टेस्ट था, वो सोसाइटी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को वो टेस्ट ऑफर करती थी, और उस टेस्ट में जो रिजल्ट आता था हम उनको बताते थे। अगर थैलेसीमिया का मेजर का आ जाता था तो हम उन्हें बताते थे कि ये मसाइल होंगे, तो आप अगर इसको अबॉर्ट करना चाहें, इस अमल को आप मज़ीद जारी ना रखना चाहें तो वो बेहतर है, और अगर आप जारी रखना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। तो जब हमने लोगों को ये बताना चाहा, तो हमारा चूँकि मुस्लिम माशरा है, मजहबी माशरा है, तो लोगों के जहनों में ये सवाल उठने शुरू हुए कि इस हवाले से, अस्कात हमल के हवाले से मज़हब क्या कहता है। उसमें हमने एक उलमा काउंसिल से रजू किया, जिसमें तमाम इस केस को स्टडी किया। उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने एक थैलेसीमिया के बच्चों को स्टडी किया कि कैसे होते हैं, उन्होंने इनकी लाइफ स्पैन के बारे में पूछा कि ये कितने अरसे ज़िंदा रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबी डिबेट्स के बाद, काफ़ी मीटिंग्स के बाद उन उलमा ने ये फतवा जारी किया कि अगर कोई फैमिली ऐसी है कि जिनके यहाँ एक सर्टिफाइड नॉलेज ये बता देता है कि आपका आने वाला बच्चा इस मर्ज़ के साथ पैदा होगा कि जिसका दुनिया में अभी कोई इलाज नहीं है, तो इस्लाम उसमें आपको ये इजाज़त देता है कि आप उसको अस्कात हमल कर सकते हैं। तो ये हमने उस पहलू पे भी काम किया। ये भी डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर जवेरिया, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की इस सिलसिले में। मतलब ये बात बहुत जरूरी है कि अगर पहले से अवेयर हो जी, पहले तो से वो बेहतर है कि हाँ, बात की तकलीफ, बिल्कुल बात की तकलीफ से, पेरेंट्स के लिए तो बड़ी बिल्कुल, तकलीफ पे बात है, जाहिर है। बिल्कुल, ये अवेयरनेस की चूँकि बात चल रही थी, तो उस पर ये फतवा मौजूद था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फतवे को बाद में इस्लामिक ईरान, उसी फतवे की बुनियाद पे उन्होंने ये कानून अपने ममालिक के अंदर भी लागू किया कि अगर कोई ऐसा इशू हो तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अस्कात हमल को। अवेयरनेस की बात हो रही थी, तो उस वक्त तो आपको पता है कि ये चैनल्स का दौर नहीं था, जिस दौर की मैं आज से 27-28 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सिर्फ PTV होता था और चंद बड़े न्यूज़पेपर होते थे, तो अवेयरनेस पे काम करना बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक आइडिया उनके जहन में आया कि हम क्यों ना कोई एक ऐसा काम करें जिससे पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने ये सजेशन दी कि हम K2 के बेस कैंप तक इन थैलेसीमिया के बच्चों को लेके जाएंगे, और हम ये साबित करेंगे कि ये बच्चे, अगर हम इनको इफ़ वी लुक आफ्टर प्रॉपरली दे कैन डू एनीथिंग। ये उस नोबल कॉज की थीम थी कि अगर हम इन बच्चों को प्रॉपर देखभाल करें तो ये आम नॉर्मल बच्चों की तरह, बल्कि उनसे बढ़कर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस थीम को जहन में रखते हुए उन्होंने 5 और एक वॉक टू द बेस कैंप ऑफ K2 जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया। वो यहाँ से उन बच्चों को लेके गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ उस वॉक को कंप्लीट किया। उस वॉक में हिस्सा लेने वाले काफ़ी सारे बच्चे अभी तक माशाल्लाह वो मौजूद हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। उससे ये हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया भी हमारी तरफ मुतवज्जो हुआ। CNN ने उस डॉक्यूमेंट्री को लिया हमसे और उन्होंने उसको चलाया, तो फिर पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस हुई कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के लोग जो मौजूद हैं जो थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने हमें ऑफ़र की, और वी आर द फर्स्ट वन जो थैलेसीमिया इंटरनेशनल बोर्ड का पहले बोर्ड मेंबर बने। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर मुशावरत होती है थैलेसीमिया के हवाले से, ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वो हमारा भी होता है। प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मन्नान जो है इस वक्त हमारी जो मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड है उसकी चेयरपर्सन भी हैं पाकिस्तान के अंदर जितना भी। तो ये अवेयरनेस के बाद अलावा बाकी जितने भी चैनल्स थे, हमने जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, कॉलेजेस के अंदर कॉलेजेस के अंदर जाके हम लेक्चर्स देते थे, सेमिनार्स करवाए जाते थे। फिर इस काम को आम आदमी तक नहीं रखा, फिर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया कि तो ये वाहिद सेंटर था कि जिसमें जो हाउस जॉब वाले डॉक्टर्स आते थे उनके लिए, जब तक प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मन्नान जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, उन्होंने ये उनके लिए कंपलसरी किया हुआ था कि हर जो बच्चा यहाँ पे आएगा हाउस जॉब करने, उसने 6 मंथ यहाँ पे ज़रूर काम करना है। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि दूर दराज से आने वाले जो डॉक्टर्स बच्चे थे
वो जब थैलेसीमिया का यहाँ से सीख के जाते थे और वापस वो जाके अपने गांव में, अपने शहर में जब वो क्लिनिक करते थे या जॉब करते थे तो उनको थैलेसीमिया का पता होता था। वो ये नहीं कहते थे कि इन्हू लाहौर ले जाओ, वो ये कहते थे कि मुझे पता है, मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा, मुझे थैलेसीमिया का पता है। तो उन्हें तमाम थैलेसीमिया के हवाले से, थैलेसीमिया के मर्ज के हवाले से बेसिक नॉलेज होती थी। उसका ये बहुत फ़ायदा हुआ कि हमारे डॉक्टर्स भी उसमें अवेयर हुए। फिर तो ब्लड सैंपलिंग में आपको कभी कोई डिफिकल्टी हुई सैंपल लेने में, जैसे कोविड का अब चल रहा था या हालात इस तरह के हमारे मुल्क के हुए में आजकल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुई? ब्लड डोनेशन के हवाले से आप कहना चाह रही हैं? जी, ब्लड डोनेशन के हवाले से हमेशा प्रॉब्लम रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है और ब्लड डोनेशन के बारे से बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। कोई कहता है कि जी आप 100 निवाले खाने के खाते हैं तो एक ब्लड ड्रॉप बनता है। कोई कहता है कि जी अगर आप ब्लड देते हैं तो आप में शायद शादी करने की अहलियत कम हो जाती है। अच्छा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस तरह की बहुत सारी मिथ्स जो है उससे एसोसिएटेड है। हमने यहाँ पे देखा कि इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है, उसके साथ 6 हट्टे कट्टे लोग मौजूद होते हैं, कहते जी सानू है ब्लड ग्रुप चाहिए है, ब्लड ग्रुप चाहिए है। अच्छा, उनसे जब पूछा जाता है कि माशाल्लाह आप 6-7 लोग साथ आए हैं तो आप में से किसी ने क्रॉस मैच करवाया? तो नहीं मैनू तो यह मसला है, मैनू वो मसला है। तो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि 6-7 के भाग गए होते हैं सारे, वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ पेशेंट की माँ खड़ी होती है बेचारी। वो कहती है कि मेरा ले लो, क्या बच्चा मेरा बच सकता है तो मेरा ब्लड ले लो। वो खुद कैरियर होती है क्योंकि थैलेसीमिया का बच्चा है, तो उसको हम कभी भी प्रेफर नहीं करते कि अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच भी कर रहा है तो हम उससे ब्लड डोनेशन लें। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेट कल्चर है कि लोग ब्लड डोनेट करते हुए प्रॉब्लम है। अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयरनेस की पहले तो पता हो ना, कि पहले से पता हो कि ब्लड देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देना भी चाहिए। तो अब चूंकि आपने ये मौका दिया है तो मैं आम अपनी समझदार आवाम के लिए ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन से, ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर इतना ब्लड स्पेयर रखा होता है। अगर इतना ब्लड स्पेयर ना रखा हो तो खुदा ना खास्ता जब कोई एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें आपका ब्लड लॉस होता है तो इंसान को फौरन मर जाना चाहिए। इंसान नहीं मरता क्योंकि अल्लाह ने उतना ब्लड आपके लिए स्पेयर रखा है। फिर जिस चीज़ की हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, ब्लड रेड सेल्स, तो ब्लड रेड सेल्स एक नॉर्मल इंसान के अंदर 90 दिन के अंदर वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं और नए जनरेट होते हैं। तो अगर वो पहले से ही आप किसी को डोनेट कर दें तो वो किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर आप एक ब्लड बैग डोनेट करते हैं तो उनसे 3 इंसानों की ज़िंदगी बच सकती है। तो खुदारा आप जो नौजवान मेरे बहन भाई हैं वो ज़रूर आगे बढ़े और ब्लड डोनेशन के कल्चर को आम करें, खुद भी इस चीज़ को समझे। अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं आप हमारे पास आए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे डोनर्स हैं 50 दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो जितने भी 18 साल और 50 साल के दरमियान लोग हैं, सेहतमंद लोग हैं, जिन्हें खुदा न खास्ता कोई ऐसा इशू, कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। और इसके बारे में कुरान कहता है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। और ब्लड ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ख़रीद सकें, आप बना सकें, कोई मशीन ऐसी नहीं है, ये एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। तो खुदारा इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें और ख़ास तौर पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जिन्हें मुस्तकिल अपनी पूरी ज़िंदगी ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उनके आप दस्ते बाजू बने, उनकी ज़िंदगी की उम्मीद की किरण को ज़िंदा रखें। लोगों को अवेयरनेस भी मिली है, जिस तरह के काम हो रहे हैं, और आपका तो माशा बहुत पायनियर में है आप लोग, और बहुत देर का चल रहा है आप लोगों का, तो लोगों को यकीनन इससे अवेयरनेस मिली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच। बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों को यकीनन मिली होंगी और बहुत फ़ायदा भी होगा। आपका दफ़ा दोबारा शुक्रिया कि आप लोगों ने इस टॉपिक को जो है अपनी लिस्ट पे ऊपर रखा, और इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान, आजा चले ऐसा सफर के दे मंजिल भी सलाम, ख्वाब देखे जो वो पूरे करने को गई नींद की हराम,
सारा खून पसीना और ये जान जुनून के नाम Batsman is gone and that typical celebration. Why not मेरी जान करेला जुड़वा है पर अलग है दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज पर अम्मी को नाज ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। सो नाज़रीन वेलकम बैक। हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था ब्रेक पर जाने का, लेकिन मजबूरी थी, बार बार हमें कहा जा रहा था ब्रेक का। और ड्यूरिंग ब्रेक भी हमने बहुत सी बातें वाइस चांसलर साहब के साथ की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बातों से मेरे माइंड में रेज हुए हैं। सो लेट्स गो विद दिस, आई थिंक नॉट होप सो लास्ट क्वेश्चन। तो अच्छा सर, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि मोस्टली ये चीज़ देखी गई है कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी किया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट की डिग्री की वैल्यू क्यों नहीं है। बिल्कुल रिदा, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्वालिटी का लेवल जो कम है उसकी जो वजह है, एक वजह ये है कि बाहर के मुल्क में स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है तो उस दौरान ही वो अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और ये उनकी सोसाइटी की एक्चुअली कंपल्शन भी होती है, क्योंकि वहाँ जो पेरेंट्स हैं 18 साल की उम्र के बाद जनरली वो बच्चों की सपोर्ट छोड़ देते हैं। बच्चा अपने They stop feeding their child. जी, उसको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है। दूसरी वजह ये होती है कि उधर यूनिवर्सिटीज़ में जो फैकल्टी होती है वो एक रोल मॉडल होती है। स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि फैकल्टी खुद कम्युनिटी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के साथ इंगेज्ड है। कम्युनिटी के, इंडस्ट्री के, गवर्नमेंट की रिसर्च ग्रांट्स फैकल्टी लेके आती है जो उनकी प्रमोशन में काउंट होती है, और उस ग्रांट पे वो खुद भी काम करते हैं। वो अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च वर्क भी कराते हैं और कभी कभार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी इंगेज करते हैं। तो इस हवाले से हमें पाकिस्तान में अपना जो सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएँ वो सिर्फ किताबी पढ़ाई ना करें, वो कोशिश करें कि उसके साथ साथ कोई प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हासिल करें। इस हवाले से आपकी यूनिवर्सिटी ने कुछ इकदाम किए हैं? जी, इस हवाले से हमने एक बहुत अहम कदम ये उठाया कि तकरीबन 1 साल पहले हमने सिंडिकेट से एक फैकल्टी की इंडस्ट्रियल एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट पॉलिसी अप्रूव कराई। अब आप ये बात जहन में रखें कि हम एक पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, लार्ज पब्लिक यूनिवर्सिटी, जहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार ये तो सरकारी जॉब है। हालांकि ये उस तरह की सरकारी जॉब नहीं है, ना ही आप कोई दिफाई किस्म का मुल्क का काम कर रहे हैं कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उस वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अरसे तक ये रहा कि जो फैकल्टी है वो पढ़ाई के अलावा कोई और काम ना करे। जो हम फैकल्टी इंडस्ट्रियल इंगेजमेंट पॉलिसी लेके आए हैं उसमें ये है कि हमने टोटली डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि फैकल्टी मेंबर्स को मुकम्मल इजाज़त है कि वो कोई भी कम्युनिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करें और उससे इनकम हासिल करें, और इनकम होली सोली उनकी होगी। यूनिवर्सिटी इसको न सिर्फ अलाउ करती है बल्कि इनकरेज करती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी को इसके 2 फ़ायदे हैं एक्चुअली। जो फैकल्टी से अगर उनके इनकम का हम कोई शेयर ले भी लें तो उसकी कोई इतनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़ों की जो हमें मिलती हैं उसकी बहुत इकोनॉमिक वैल्यू। सर काइंडली हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो जो 2 फ़ायदे आप बता रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूनिवर्सिटी उनको डिस्कस करना आप इम्पॉर्टेंट समझते हैं, तो वो 2 फ़ायदे क्या हैं सर? जी, जब आपके फैकल्टी मेंबर्स इंडस्ट्री के साथ इंगेज होते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं या कम्युनिटी के साथ इंगेज होते हैं और प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जब वो क्लासरूम में पढ़ाने आते हैं अपने सब्जेक्ट को, तो जो एग्जाम्पल्स समझाने के लिए स्टूडेंट्स को देते हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स होती हैं, जिससे बेस्ड होती है। जी, जो रियलिटी बेस्ड है कि बच्चे को समझने में आसानी होगी कि ये जो कॉन्सेप्ट किताब में बताया जा रहा है ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, नंबर 1। नंबर 2, अब यही फैकल्टी मेंबर्स, इनको ये भी इजाज़त दी गई है मुकम्मल तौर पे कि ये उस काम में स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं। जो कि 2 बातें, एक तो स्टूडेंट एक इकोनॉमिकल लेबर प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ साथ स्टूडेंट भी ट्रेन होता जाता है। और जब स्टूडेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे पढ़ाई के दौरान काम करता है तो उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि उसके कैरियर में उसको क्या चीज़ें, कौन सी स्किल्स चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत अपने जो एकेडमिक प्रोग्राम है, इलेक्टिव्स हैं, उनको भी टेलराइज कर सकता है कि उसकी इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट में आसानी हो जाए। अब ये हुआ कि बजाय इसके कि एक सिंगल ऑफिस है
कि जिसमें स्टूडेंट प्लेसमेंट का काम हो रहा है। अब आपके लेट्स से कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर 1000 फैकल्टी मेंबर्स हैं और अगर सारे इस मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आपके 1000 करियर काउंसलर्स और प्लेसमेंट ऑफिसर्स बन गए। अब अगर आपने 50,000 स्टूडेंट्स को प्लेस करना है तो 1000 ऑफिसर्स की मदद से वो कामयाबी से प्लेस हो जाएंगे। और अगर एक ही दफ्तर ने 50,000 स्टूडेंट्स को प्लेस करना है तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि यानी कि सर आप कहना चाह रहे हैं कि उनका लर्निंग प्रोसेस में ही उनका मेकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि दुनिया में जो सबसे कामयाब टीचिंग मॉडल है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें इमर्स हो जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाते हैं। और इस वक्त मैं एक मेरी फेवरेट सेइंग है वो मैं कहना चाहूँगा कि इन थ्योरी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस देयर इज। यानी किताब में जो थ्योरी दी जाती है वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है रियलिटी का। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दिए जाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को समझाने में आसानी हो। जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि किताब में बात बताई तो ठीक थी लेकिन बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको उनको भी फेस करना है। इसी को एक्सटेंड करेंगे हम। ब्लरी सा अच्छा आपके सामने आ जाता है एंड स्टूडेंट के लिए जिसका माइंड पहले ही पम्प्ड अप है, ब्लेंडेड है विद थॉट्स, तो उसको लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को। अच्छा, इसमें भी रिदा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात के जो है किसी को हम एक्सटेंड करेंगे कि जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का व्यूअर्स जो है वो टूरिज़म डिपार्टमेंट है जो कि बड़ा फॉल डिपार्टमेंट है। तो ये टूरिज़म जो है ये स्टूडेंट की लाइफ में कितनी अहम है, उसके लिए एक्सपोजर जो है और स्पेशली पाकिस्तान के जो वेरियस एरियाज़ हैं उसकी जो खूबसूरती है उसको एक्सपोज करने के हवाले से उसकी हवाले से ये डिपार्टमेंट जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने इनिशिएट किया। तो इसकी इंपॉर्टेंस किस कदर है और ये भी बताइएगा कि आपको खुद टूरिज्म का किस हद तक शौक है? क्योंकि सर टूरिज्म इज समथिंग जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है, रेज अप कर सकता है, लेकिन बात बस ये है चीज़ों को प्लान अप करने की और समझने की। बिल्कुल 100% आपने सही बात की। देखिए टूरिज़म एक एक्टिविटी है जो बैक वक्त रिक्रिएशनल भी होती है और एजुकेशनल भी होती है। इनफैक्ट किसी सियाने आदमी ने यह भी कहा है कि जो ट्रैवल है टूरिज़म में, आप ट्रैवल करते हैं अपने एरिया को छोड़ के एक दूसरे एरिया में जाते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। ट्रैवल जो है ये प्रेजुडिस को ख़त्म कर देती है कि इंसान के अंदर से जो तासुबात और इनटॉलरेंस है वो ख़त्म हो जाती है। और वसीला ज़फ़र भी कहते हैं, कामयाबी का भी जरिया है ट्रैवल और टूरिज़्म। और गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे से एम्फेसाइज किया है कि टूरिज़्म सेक्टर को हमें डेवलप करना है, कि पाकिस्तान के पास नेचुरल जोग्राफिकल भी प्लेसेस हैं जो देखने के लायक हैं और फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जो देखने के लायक हैं। तो उस हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसका सबसे बड़ा फोकस तो ये है कि जो बहावलपुर रीजन है इसके अंदर विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पॉसिबल है। फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, डेजर्ट की ब्यूटी है, डेजर्ट में रैलीज़ होती हैं, फिर करीब ही उच्च शरीफ है, मज़ारात हैं इस पूरे ख़त्ते में, और कदीम ज़माने के टेम्पल्स हैं, आसार क़दीमा है, और यहाँ तक के एक 7000 ईयर ओल्ड हाकड़ा सिविलाइजेशन के रिमेन्स यहाँ पे बहावलपुर रीजन में हैं जो अभी फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हुई। लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर अभी दिसंबर में एक एक्सपीडिशन कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल जो एक पाए के इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके पास और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास जॉइंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है और हम उससे जो चोलिस्तान हेरिटेज म्यूज़ियम है यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि शायद आपके नाजरीन को पता हो या ना पता हो कि ये जो इंडस रिवर है, अगर नहीं पता तो अभी हम बता देते हैं व्यूअर्स जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है ना सिर्फ ये पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट कर रहा है बल्कि ख़ित्ते की सकाफ़त को जो है यहाँ की जो तहज़ीब है उसको प्रमोट करने के हवाले से जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और स्पेशली रिदा यहाँ की जो जीप रैली है उसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है उसका पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ जो है वो बड़ा तावन है और उसके साथ कोऑपरेट करके, तो आप ये समझते हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इससे भी बहावलपुर को जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकग्नाइजेशन मिली है? जी बिल्कुल, जो जीप रैली है वो तो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल का इवेंट बन चुका है तकरीबन, और अब सिक्योरिटी के हालात भी इजाज़त देते हैं कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को आने दिया जाए। और हमारे ख़ित्ते की न सिर्फ पहचान बन चुकी बल्कि पिछले 2 साल 2020 और 2021 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने बहावलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिल के दोनों जीप रैलीज़ में बहावलपुर ट्रेड फेयर लगाया, जिसमें तकरीबन 60 के करीब स्टॉल्स थे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हमने
शोकेस किया जीप रैली के विजिटर्स के लिए, और फिर मज़ीद ये कि शहर में जो टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बस चलाई है, टूरिज़म बस, हमारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर उसको मैन करते हैं, उसके अंदर जो टूरिस्ट हैं उनको ब्रीफिंग देते हैं, और टूरिज़म जो जीप रैली है उस दौरान डिफरेंट अशर्स के तौर पे काम करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स को मैनेज करने के लिए, और स्पेशली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसमें स्टूडेंट्स हमारे बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जो जीप रैली के दौरान है। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और व्यूअर्स, जैसा कि आपने जो है वो जाना कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है वो ना सिर्फ इस खिते की बल्कि पाकिस्तान की जो है वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है वो उसके दर्जा इख्तियार कर चुकी है, और इसी तरह से हम मजीद भी दोबारा से भी अब हमारे इस इंटरव्यू के बाद जो है वो हम दोबारा भी इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू रखेंगे और दोबारा से भी डॉक्टर साहब का जो है वो वक्त देंगे। इसी के साथ मुझे और मेरी जो को होस्ट हैं रिदा आगा, हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर नवीद इकबाल को देखते हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर। हम इस वक्त मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल में और मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल साहब से। आइए। जी, हम मौजूद हैं डॉक्टर नवीद इकबाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी, और इनसे बात करते हैं थैलेसीमिया के ही हवाले से, जो सोसाइटी यहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है, इसमें इसके हवाले से इनके क्या व्यूज़ हैं। जी, जो डॉक्टर जासमीन राशिद और डॉक्टर जवेरिया मनाल ने बनाया हुआ है ये सारा जो सोसाइटी का थैलेसीमिया के पेशेंट के हवाले से, आप कुछ थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे चांस दिया कि मैं इस पर अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये थैलेसीमिया सेंटर जो है वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन पाकिस्तान, जहाँ थैलेसीमिया के बच्चों को हर किस्म की सहूलत मैसर है। इसके फाउंडर में जो हमारी मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रोफेसर यास्मीन राशिद साहबा, इनका बड़ा रोल है। इनको हम अपने हेल्थ प्रोफेशन में आयरन लेडी के नाम से याद करते हैं। बड़ी एनर्जेटिक ख़वातीन है, जब से ये आई हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से और इनकी काविशों से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बेहतर हो गया है। और सेम उन्हीं के जो डोनेशन भी देती हैं उसको मेंटेन भी करती हैं और उसको सारा लीड भी करती हैं। उनकी जो विजन है इसमें कोई हमें डाउट नहीं है, बल्कि इनकी विजन को लेकर हम आगे चलते हैं। और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस सेंटर को और से और तरक्की देगा। इसमें बहुत सी सहूलत इन्होंने दी हैं, जैसे ट्रीटमेंट भी हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी हैं। उसके बाद जो बच्चे यहाँ आते हैं उनका रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी हैं, ताकि उनको किस तरह मुआशरे का एक मुफीद शहरी बनाएँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस सेंटर को मज़ीद और मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद इसको अच्छा लोगों के लिए सर्विस के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मौके मुहैया से, और लोगों को भी आना चाहिए इसमें एक जो पब्लिक अवेयरनेस मैसेज मैं इसमें देना चाहूँगा वो ये है कि लोगों को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। डोनेशन की दो सूरतें हैं, एक तो ब्लड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो पेशेंट वहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए मेडिसिन के लिए इनको प्रॉब्लम होता है, उसके लिए जितना डोनेट करते हैं मैक्सिमम करें। तो ये एक अच्छा काज है। अल्लाह ताला भी कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमारी मैडम को भी जिंदा सलामत रखे, इनको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला इन पे मेहरबानी करे। वो बेचारी आजकल वैसे भी थोड़ी बीमार है, तो इंशाल्लाह लोगों को भी आना चाहिए और किसी तरह से भी वो कंट्रीब्यूशन करें, चाहे वो ब्लड के हिसाब से, चाहे वो पैसे के हिसाब से, या वो अपने सर्विसेज भी दे सकते हैं मन के आके। यहाँ पर ये भी कंट्रीब्यूशन होती है और सदका जारिया होता है, ऑब्वियसली किसी की जान बच जाती है और किसी के ये आप जब देखें ना कि जब एक बच्चा आता है उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, जब उसको ब्लड लग के जब वो वार्ड से निकलता है ना, उसके चेहरे पे जो रौनक होती है ना, उसका ना कोई पेमेंट है, ना ही उसके कोई समझ लें आप जज़ा समझ लें या उसका कोई निमुल बदल है। तो वो जो चीज़ है ना, वो जब वो दुआ करता है ना दिल से, तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला उसको ज़रूर सुनते हैं और उसका अजर देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
आज आपने मुलाकात की यहाँ की सोसाइटी जो थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट देते हैं, डिफरेंट उनको फैसिलिटीज़ भी देते हैं, पेशेंट्स को आपने देखा। नाज़रीन, NGOs बहुत सारी होती हैं जो सेहत के हवाले से, वोकेशनल के हवाले से और तालीम के हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सोसाइटी है जो हर तरह की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तालीम भी, वोकेशनल भी और उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। उनको खाना भी इवन के प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने सारा ऑब्जर्व किया, हमारे साथ रहे हैं, आपने देखा है। उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी दी जाती है, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है, वोकेशनल की टूर्स भी रखे जाते हैं इनके लिए। इनको मेंटल साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं पेशेंट्स के अंदर, उनके हवाले से भी अवेयरनेस दी जाती है। पेरेंट्स को अवेयर किया जाता है कि इस बीमारी से बचने के लिए और बिफोर प्रिकॉशनरी तौर पर इनको क्या काम करने चाहिए जो इस बीमारी से बच सके। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपने देखी जो यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। पायनियर डिपार्टमेंट है, पायनियर सोसाइटी है ये पाकिस्तान की, जो थैलेसीमिया के हवाले से काम कर रहे हैं। यहाँ तक का प्रोग्राम, आज का हमारा यहाँ तक का प्रोग्राम आपने यकीनन बहुत सी नॉलेज दी होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन में। तब तक के लिए मुझे शाहिदा नवीद को तुमसे मेरी पहचान पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। शहर बसते हैं वहाँ के वासियों से और उनके दिलों में कायम मोहब्बतों से। DHA मुल्तान में भी हमने आपके लिए मोहब्बतों, कामयाबियों और खुशियों भरी कहानियां इकट्ठी की हैं। लाहौर से आने के बाद मैंने और सना ने DHA मुल्तान को ही चुना। मुल्तान में रिहाइश के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, लेकिन DHA मुल्तान देखने के बाद सोच लिया अगर रहना है तो DHA मुल्तान में ही रहना है। DHA मुल्तान में घर बनाने का मशवरा एक दोस्त ने दिया और रियली क्या अच्छा मशवरा था कि घर बनाने का मजा आया ना। आला लोकेशन, बेहतरीन माहौल, खूबसूरती और चारों तरफ हरियाली, यकीन माने कि दिल खुश हो जाता है। अंदरून शहर में तो गली में गाड़ी ले जाना भी मुश्किल, और यहाँ DHA मुल्तान में वड्डी वड्डी सड़कें, हर तरह की सहूलत, बेहतरीन स्कूल्स और फिर मोहल्लेदारी। क्या बात है। हम DHA मुल्तान में क्या रहे, यहीं के हो गए। बच्चे जब दिल चाहे जू में सैर के लिए निकल जाते हैं और हर सहूलत घर से चंद कदम के फासले पर है। मस्जिद और पार्क में नए दोस्त बने और फिर ये दोस्ती पक्की होती चली। मैं तो गोल्फ खेलता ही था, सोचा कि दोस्तों को भी रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी ले जाया जाए। ओ बिलाल यार, ओए साडे बस दी गल नहीं। रोमांजा एक मुकम्मल गोल्फ कम्युनिटी है, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स और यहाँ की क्लब हाउस फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं। रोमांजा में गोल्फ एक अलग ही एक्सपीरियंस है और फिर नाइट गोल्फिंग इज अमेजिंग। बिलाल, मैंने सोच लिया, बड़ा कार अब मैं रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी में ही बनाऊंगा। खवातीन की अवली तरजीह सिक्योरिटी है और हम DHA मुल्तान में अपनी जिंदगी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुजार रहे हैं। मुझे तो डेली वॉक के लिए अपने पार्टनर भी मिल गई है। क्यों मिसेस ख्वाजा? शुक्र है बच्चे घर से तो निकलते हैं। खेल ही खेल में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। वैसे बिलाल, DHA मुल्तान की रौनकें ही अलग है। रोड पे निकलो तो हर ड्राइव एक लॉन्ग ड्राइव लगती है। बड़ी अच्छी प्लानिंग है। जहां घर वहीं कारोबार। सेंट्रल स्क्वायर में अपनी बिल्डिंग शुरू की है। DHA मुल्तान तरक्की करेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। बताओ जी, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहां आमू के बाग हो? वाह जी वाह, दरख्तों की छांव में बैठ जाएं तो नेचर के और करीब हो जाते हैं। और फिर ग्रीनरी और प्लांटेशन देखिए, इससे तो मौसम भी बदल जाता है और दिलों के मौसम भी।
वैसे डीएचए मुल्तान में टेम्परेचर 3-4 डिग्री कम ही होता है। इनकी बातें और इन जैसे सैकड़ों खानदान डीएचए मुल्तान में जिंदगी को हर रंग में जी रहे हैं। इतना हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक गैस सर्विसेज के बावजूद डीएचए मुल्तान में प्लॉट्स की कीमतें इंतहाई मुनासिब हैं। सेक्टर वी, आई और B1 की डेवलपमेंट अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है और अनकरीब प्लॉट्स का कब्जा दे दिया जाएगा। नए घरों की तामीर के लिए ये एक सुनहरा मौका है। डीएचए मुल्तान में 5, 8, 10 मरला और एक कनाल के हजारों घरों की तामीर भी तेजी से जारी है। डीएचए मुल्तान के सेक्टर्स में इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन, वर्ल्ड क्लास थीम पार्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वर्ल्ड क्लास मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेहतरीन सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम, फास्ट और नमल यूनिवर्सिटी के अलावा मुल्क के बेहतरीन स्कूल्स और रिहायशियों के लिए बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं, जो डीएचए मुल्तान को पाकिस्तान की सबसे मुनफरिद और इको फ्रेंडली हाउसिंग कम्युनिटी बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि डीएचए मुल्तान हर तरफ से शहर से जुड़ गया है? बोसन रोड एक्सेस, सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर, मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड और नॉर्दर्न बाईपास एक्सेस, मत्तीतल रोड गेट से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और दीगर पब्लिक ऑफिसेज तक आसान रसाई, शाह रुकने आलम गेट और फातिमा जिन्ना बुलेवार्ड की तकमील एक बड़ा संगे मील है, जिसके बाद नेशनल हाईवे और मोटरवे से डीएचए मुल्तान का फासला चंद मिनट का है। वैसे भाइयों, खाने का जिक्र तो रह ही गया डीएचए अरीना में। खाजा साहब, आज फिर खाना तुसा खवाओगे हैं? अच्छा फिर आज रहनी दो। डीएचए मुल्तान, पैराडाइज ऑफ साउथ पंजाब। मेरी जान मैं सदके दे कुर्बान, मेरा सोना पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा सोना पाकिस्तान। बड़ा प्यारा है, अखियां दा चन ते तारा
त्रिकड़दाती तुम 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 सच के लम्बरदार बेखौफ खतर इजहार तुम सच के लम्बरदार बेखौफ खतर इजहार तुमसे तफरीह मिले तुमसे खबर मिलती है दिल के बागीचे में क्या क्या नकली खिलती है तुम जो रोशन हो तो रोशन है हर एक दरिया जाम तुम जहर दोगे तो फिर शाम कहाँ ढलती है बसालत तुम समात तुम हिफाजत तुम हिमायत तुम नयाबत तुम क़यादत तुम हिदायत तुम वज़ाहत तुम तनना 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 We are PIA, Pakistan International Airlines, the national flag carrier and the most prominent Pakistani entity in the international skies. With our head offices in Karachi, we operate from two major hubs, Karachi in the south and Islamabad in the north. Flying passengers across the globe is our fleet of 32 state-of-the-art aircraft, with the Boeing 777 family serving as our workhorse, supported by A320s and ATRs. We are the first non-communist airline to fly into China, opening it to the world, creating truly global east-to-west connectivity since 1960s. First to connect Asia to Europe and Moscow. Upholding a tradition of introducing successful aircraft to the world, our 777 holds a world record of the longest non-stop flight. We are an expanding network of 27 international and 21 domestic routes, and the only airline to operate to the most beautiful northern areas of Pakistan. We are a synonym of Pakistani hospitality, known for our most delicious meals, prepared in our own kitchens, exhibiting high levels of professionalism. Our highly trained pilots and crew are recognized the world over. Those smooth landings don't come just from instincts. We have one of the most competent and professional engineers who service not only PIA, but all major airlines. The Isfahani hangar, when first constructed, was among the largest in the world and serves as home for all PIA fleet for maintenance. PIA is Pakistan's most iconic brand. The nation's love and emotional attachment for PIA is unprecedented. PIA's journey to success continues with ever-improving customer care. Increasing global spread, providing connectivity from all parts of Pakistan to the world, reducing distances, spreading love, celebrating the seasons and colors of Pakistan. We are Pakistan International Airlines. We are great people to fly with.
तो फाइनली तुम ये कमरा खाली कर दोगी? कितनी दफा बताओगी? और ये घर भी खाली कर जाओगी? कहीं तुमने जो दिल की बात, क्या बात है ये जो तूने दी मुझे सौगात, क्या